Assalamu alaikum, everyone. Ji, Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are well. And this is my life after a very long time. And a bit of introduction before I start, the session. Today's session is going to be about exploring the opportunities for studying abroad. Or the reason I'm doing this is that I have been getting a lot of requests to help support students to go abroad for studies, students who need scholarships, students who just need guidance, or students who are looking to have a better future, or just they're just looking for studies that can give them an edge over other things. So I decided that I should do a live for this prospect, and I'm live through my own page, through my company's page, Learning Leaders, JK Education Innovation Consultancy, and many other pages that are partially or fully owned by me. So the reason I'm doing this session today is to give you guys a bit of insight, आप लोगों को एक insight दूँ कि क्या क्या opportunities available हैं, क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, हम इस सब में आपका क्या फ़ायदा कर सकते हैं, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, हमसे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कर लूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु नॉट बीन एबल टू नो मच अबाउट मी और डोंट नो मच अबाउट मी. I am Dr. Jabban Ali Khan. I am based out of Islamabad, Pakistan. I usually move around for because of my business activities to the Middle East or other areas, but I'm mostly based out of Islamabad, Pakistan. And I've been in the education sector for the last, more than a decade. And I've been serving with multinational companies for different prospects, majorly entirely for education, for the improvement of education, for the improvement of education through technology, and many other aspects. So this life is very crucial for me as well because I believe in the current economic circumstances. आजकल की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उसके लिहाज से ये एक बहुत ही important session होगा. And all those individuals, no matter of what age, those are looking to go abroad in terms of studies, ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. सो इस चीज़ को ज़रूर माइंड में रखिएगा. और अगर कोई और काउंसलर्स हैं, एजुकेशन पार्टनर्स हैं और अदर पीपल हैं जो समझते हैं कि ये एक ज़रूरी चीज़ है, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है. सो मूविंग ऑन, सबसे पहला जो चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि एक जनरल कॉन्सेप्ट है या एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं वो समझते हैं कि ए लेवल्स या एफएससी करने के बाद वो बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं. ये जो एक जनरल फिनोमेना है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर किसी की अंडरस्टैंडिंग है, बट एक मेजॉरिटी ऑफ मास की ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये ही एक शुरुआत है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. एक्चुअली आप ओ लेवल्स के बाद या अपने मैट्रिक के बाद बाहर पढ़ना जा सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे मुल्क, अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जिसमें यूके शुमार है, यूएस शुमार है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और मुख्तलिफ और ममालिक हम एडेड हैं उसके अंदर. लेकिन प्राइमरीली जो सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहता है इवन आफ्टर कोविड वो यूके का है. तो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं फॉर दोज यंगस्टर्स जो ओ लेवल्स या मैट्रिक करने के बाद बाहर पढ़ने जा सकते हैं.
जाना चाहते हैं या उनके पास उनको लगता है कि उनकी बाहर एजुकेशन उनको ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि सच भी है कि फ़ॉरेन एजुकेशन ऑब्वियसली आपके करियर में एक डिफरेंट इम्पैक्ट लेकर आती है, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड रिकगनाइज भी की जाती है, और आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं उसकी वजह से। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये समझने वाली है कि आफ्टर योर ओ लेवल्स या मैट्रिक इन पाकिस्तान, आप जो हैं यू कैन गो आउट फॉर स्टडीज़। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि आप जब इस ओ लेवल्स या मैट्रिक के बाद पढ़ने जाते हैं, तो वो जो है वो फाउंडेशनल कोर्सेज के अंदर आप जाते हैं। आफ्टर योर फाउंडेशन स्टडीज़, आप अगर किसी अच्छे मीडियम के थ्रू जाते हैं, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जो आपको फाउंडेशन पाथवेज जो हैं आपको हेल्प करते हैं, उसमें आप अपनी फर्दर बैचलर्स को परस्यू कर सकते हैं, फिर मूविंग ऑन टू मास्टर्स, एंड देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू स्टडीज ऑफ कोर्स। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट इवन आफ्टर यू जॉइन द फाउंडेशंस, उस वक्त भी आपके पास इतनी ज़्यादा लेवरेज है कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं, हाई ग्रेड्स लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपके पास वो हर अपॉर्चुनिटी है जो आपको चाहिए अच्छी सी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मैं इसमें ज़्यादा फोकस यूके का क्यों कहता हूँ कि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इजी टू गो है, एंड पढ़ने के लिए भी है, और बाकी भी कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं। अब इस चीज़ को सवाल अगर किया जाए एड्रेस पहले कि बाकी क्या है, ऑब्वियसली ए लेवल्स एफएससी के बाद भी आप लोग पढ़ने के लिए जा सकते हैं बाहर, जो कि एक बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी जो है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो ए लेवल्स या एफएससी के बाद पढ़ने के लिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मैस है जो जाता है, जो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाता है, पढ़ता है, अपना करियर इम्प्रूव करता है। इसी तरह बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स में भी जा सकते हैं, बट कुछ इंडिविजुअल्स जिनके बैचलर्स में स्कोर कम होते हैं या किसी वजह से उनको एडमिशन्स नहीं होते, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होती है जो कि बहुत सारे लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, दैट इज़ प्री मास्टर्स। आप प्री मास्टर्स में भी जा सकते हैं एंड देन यू कैन मूव ऑन टू मास्टर्स। ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है कि जो स्टूडेंट किसी वजह से मास्टर्स में डायरेक्ट एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते, कोई भी वजह होती है, मे बी ग्रेड्स का इशू है या कोई और जो भी रीज़न आप कह लें, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन ऑब्वियसली यू कैन गो इनटू द मास्टर्स इटसेल्फ। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो ओ लेवल्स, एफ एस सी, मैट्रिक, ए लेवल्स, बैचलर्स, मास्टर्स, ये जो डिग्रीज हैं ये एक कॉमन स्टडी रूट्स हैं, और ये बहुत मेजॉरिटी में मैथ्स में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस, एवरीवन इज़ वेल फेमिलियर विद इट, वेल अवेयर ऑफ इट। हम लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं स्टडी अब्रॉड में एडमिशन सिक्योर करने के लिए। उनको सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए हो सकती हैं। So, but there are some students, there are some individuals, there are some youth in Pakistan जो कि आगे रिसर्च बेस में भी जाना चाहती है, जो कि एमफिल में जाना चाहती है, एमएस में या फिर पीएचडी में जाना चाहती है। उनको उनके लिए मैं ये चीज़ बताऊं कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना पड़ता है। बाय स्पेसिफिक आई डोंट मीन कि कोई ख़ास रूट, बट एक वेल मैनेड तरीके से आपको उस चीज़ को अप्रोच करना पड़ता है कि आपको अपना ज़ाहिर है, जब आप किसी रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी लेवल में जाते हैं या ऐसी डिग्री में जाते हैं जिसमें रिसर्च उसका एक मेन हिस्सा होता है, तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है बेसिक। एक तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल, सेकेंडली जो आपका रिसर्च पेपर का टॉपिक होता है या आपका जो प्राइमरी पेपर होता है वो बहुत मैटर करता है। ज़्यादातर हम लोगों ने ये रुझान देखा है कि जो पीएचडी या स्कॉलरशिप या पेपर्स में जाना चाहते हैं, रिसर्च पेपर्स में जाना चाहते हैं, वो स्कॉलरशिप की तरफ देखते हैं, विच इज़ पॉसिबल, बट पर उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट होने की भी ज़रूरत है, जो कि इंशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग होंगे, लेकिन आपके पेपर भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, आपकी स्टडीज़ भी उतनी कम्पेटिटिव होनी चाहिए। सो ये चीज़ प्लीज़ माइंड में रखिए कि आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं, एंड देन व्हेन यू कम टू पीएचडी और रिसर्च बेस्ड पेपर्स, उसमें यूनिवर्सिटी तो आपकी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, बट जो आपका सुपरवाइज़र है जिसके साथ आप गेट इन टच करते हैं, जो आपको सुपरवाइज़ करने के रेडी होता है, वो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है। अक्सर लोग भूल जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें एडमिशन करा दें, बट इफ़ यू डोंट हैव अ सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज योर रिसर्च, टू लुक ओवर योर रिसर्च, तो आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं है, और वो ही सुपरवाइजर्स उनके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं जो वो रिलीज़ कर सकते हैं फॉर competitive कैंडिडेट्स, फॉर पोटेंशियल कैंडिडेट्स,
सो ये चीज़ आप बहुत माइंड में रखिए। सेकेंडली, नाउ मूविंग ऑन कि कौन कौन सी कंट्रीज़ पढ़ी जा सकती हैं। इससे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हम एज लंदन लीडर्स, जे के एजुकेशन मिशन कंसल्टेंसी, माई सेल्फ एंड माई वेरी वैल्यूड रिस्पेक्टेबल कॉलीग्स, हम लोग आप लोगों को मुख्तलिफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ दिस रिगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपकी स्टडी काउंसलिंग है, आपकी करियर काउंसलिंग है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपकी वीज़ा की काउंसलिंग है, क्या वीज़े के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। Then once you have the admission, you have the visa, हम आपको before you depart for your destination country, हम आपको एक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन भी करते हैं कि जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, और वहाँ जाके आपने फौरी तौर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, सो दैट आपको आप एक अच्छा स्टार्ट कर सकें। एंड डूज और डोंट्स भी हम आपको बताते हैं एज अ पाकिस्तानी नेशनल, as a Pakistani student who's going abroad to study. You are the face of Pakistan, so whatever you do represents Pakistan as well. So हम उसके लिए भी आपको गाइड करते हैं. So we're not just a commercial based counselors, we are career counselors. We help build our nation, we help build our youth. हम उनको एक डायरेक्टिव देते हैं, हम उनको एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, हम उनको एक फिनोमेना क्रिएट करते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ समझ आ गई है तो हम आगे इससे बढ़ते हैं कि इसमें मज़ीद क्या चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द countries that are popular destinations for studies for Pakistanis. Naturally, जो आजकल even after COVID, the most popular country right now is obviously UK for studies. अब उसमें आप ओ लेवल्स के बाद जाना चाहते हैं, ए लेवल्स के बाद करना जाना चाहते हैं, मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स बार बार कहता हूँ, सो मैट्रिक और एफ सी इज़ इक्वली इंक्लूडेड, एंड देन बैचलर्स है, मास्टर्स है, आप लोग जा सकते हैं, इसमें सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। देन यू हैव यूएसए। नाउ आई एम नॉट मेंशनिंग दिस कंट्रीज एज पर प्रायोरिटी। मैंने यूके इसलिए मेंशन किया क्योंकि कोविड के दौरान सिर्फ यूके ही था जिसके बॉर्डर्स खुले थे, एंड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज। देन यूएसए है, देन यू हैव कनाडा, then you have Australia, you have Netherlands, एंड मुख्तलिफ अदर कंट्रीज़ भी अवेलेबल हैं। देन आप यूरोपियन साइड पे भी आ सकते हैं। यूरोपियन साइड्स पे वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन इज़ जर्मनी ऑफ कोर्स, लेकिन जर्मनी में सम स्टूडेंट्स फेस द इशू ऑफ ब्लॉक काउंट्स, बट टू बी ऑनेस्ट अगर इतने तो आपको वैसे भी फंड्स चाहिए, तो आप कहीं भी चले जाएं आपको रहने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, तो जर्मनी जस्ट हैज़ दिस पॉलिसी टू इंश्योर दैट यू हैव द रिक्वायर्ड फंड्स टू स्टडी, एंड जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशंस, मोस्ट recognizable destination in the world for these studies. जर्मनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसकी एजुकेशन या तो फुली या बहुत ही लो लेवल पे कॉस्ट होती है, उसकी कुछ एडमिशन कॉस्ट होती है, ऑपरेशन कॉस्ट होती हैं, बाकी मोस्टली वो फ्री होती है। वीज़ा प्रोसेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी वीज़ा नहीं मिलता, ये नहीं होता। ऐसा हुआ है कुछ अरसे पिछले 1-2 साल में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन ये ऐसे ऐसे करके जर्मनी भी इसको एड्रेस कर रहा है, एंड दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस पॉलिसीज इन द अपॉइंटमेंट सिस्टम व्हिच विल also reduce this burden of excessive applications, और फॉल्स एप्लीकेशंस उसको भी रिड्यूस करने की ऑप्शन अब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दे आर अंडर डिस्कशन, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिस्टम, सो लेट्स नॉट लूज होप, एंड लेट्स मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन यू हैव Italy. Then some there are some good institutions in Paris as well. Paris is in Paris, uh, obviously France, and then obviously Scandinavian countries जो हैं उसमें education totally free है। आपको अपने expenses meet करने के लिए जो है उसके हिसाब से आपको bank statements वगैरह चाहिए होती हैं। Then there is obviously another world where you can where a lot of students also go try to go abroad and study, which is the Central Asia, जिसके अंदर किर्गिस्तान बहुत मशहूर है for medical students, Russia है for medical students, China is very famous for communications, media studies, literature, and obviously medical. ये कुछ aspects हैं. A lot of students go to China. In fact, the last time I was visiting China and I had to go get a visa, I saw that 99% of
individuals that were there were for student visa applications. So उससे ये बहुत अच्छा अंदाज़ा होता है कि चाइना में एक एम्पल अमाउंट ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट जाता है पढ़ने के लिए, एंड चाइनीज़ डिग्रीज आर वेरी नाइस एज वेल. Then you obviously have studies in Middle East. UAE में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं. UAE में अमेरिकन बेस्ड, फॉरेन वेस्टर्न बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ जिनकी उनकी ब्रांचेस भी मौजूद हैं. जिन स्टूडेंट्स को किसी वजह से लेट्स से यूएसए का वीज़ा नहीं मिलता, उसकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो उनकी ब्रांचेस यूएई में हैं, देन दे कैन गो स्टडी इन द यूएई, गेट द सेम डिग्री विच हैज़ द सेम वैल्यू फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट. द ओनली डिफरेंस इज़ कि आप अमेरिका की जगह यूएई पढ़ेंगे. सो इफ़ योर टारगेट इज़ टू get the best degree possible and you're facing a visa issue or some traveling issue, then UAE is your good option as well. अगर आपका ये टारगेट है कि नहीं आपने यूएस में जाके पढ़ना है, then that's obviously a different story. उसको भी एड्रेस किया जा सकता है जी. मिडिल ईस्ट में obviously like I said, Middle East में a lot of universities are there for bachelors and masters, which are branched out from Western universities, have the same degree value, same degree validation, importance. ये सब चीज़ें बहुत important मैटर करती हैं. Then obviously जो चीज़ मैं mention करना चाहूँगा कि for students who have the set budget to go abroad study, go study abroad, then they should definitely look into these Western countries. And if you want to go abroad in the January intake, don't forget to get in touch with us, my team, myself, or through our pages. आप हमें inbox भी कर सकते हैं. My WhatsApp is mentioned in the chat. If you can obviously send us an inbox on Facebook. इसी तरह आप अगर because right now we are taking January intakes, we are applying for January intakes, and then once that's done, obviously we'll move on to September intake. But right now the window is open. So if you're planning to go abroad for studies for the January intake, this is the time. Let's not waste our time. Let's take this opportunity to make sure that we apply in time with the required documents and secure your admission abroad. And we see you go fly out from Pakistan for a better career and future and education. इसी तरह अब आगे चलते हैं. जो इंडिविजुअल्स जिनको स्कॉलरशिप बेस्ड स्टडीज चाहिए थी, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये मेंशन करना चाहूँगा कि इसमें scholarships की भी नेचर होती है. Either they're fully funded, they're partially funded, they're a part of it is funded. I often get this messages by students who are seeking a fully 360 full scholarship which fulfills their education, their residence, accommodation, and other expenses. These scholarships, you must understand, are limited. ये limited scholarships होती हैं. Obviously we can get in touch with you with this, we can help you file for this application, but you must understand that you are competing with the entire Pakistan and many other countries that are applying for the same scholarship. So you have to have a competitive edge. The thing that helps you is that we, as experienced in the counselors, we know what the application requires, what they are looking into the students, what sort of candidates they are seeking. So हम आपको उस तरीके से आपकी एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करते हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, आपकी जो चीज़ें सही नहीं होती हैं वो ठीक करवाते हैं, जहाँ कमी पेशी होती है वो पूरी करते हैं. So ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. But then again ये एक limited resource है. But if you are willing to apply for this, you want to take the chance, which is very nice. If you don't try, you won't know. So you can get in touch with us. We'll be happy to help you for this, and we'll be happy to make sure that you secure that spot and go abroad for studies that are fully funded. Then obviously mostly जो Scandinavian countries और European countries हैं उसमें education फ्री होती है. दैट मीन्स कि जो आपके एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन साइड के जो एक्सपेंस है वो तो आपका ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ज़ीरो हो जाता है, या बिल्कुल माइन्यूट सा होता है, वेरिएबल होता है, जो कि आप समटाइम्स इवन पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन हैं उनसे भी कम होता है. सो उसमें आपको ये नज़र में रखना पड़ता है कि जो वहाँ पे रहने का खर्चा है. अब हम हमेशा ये अज्यूम करना चाहिए कि आपके पास इतना फंड है कि आप विदाउट वर्किंग इन दैट सेड इन्वायरमेंट वहाँ पे जाके विदाउट वर्किंग, जो कि आपके अलाउड आवर्स होते हैं बेशक 22 हैं 24 आवर्स हैं, उसके बगैर जो आप काम करते हैं
उसके बगैर आपके पास इतना बजट है कि आप अपनी जो सोशल लाइफ है, अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके वहाँ पे रह सकते हैं, और पर आपकी पढ़ाई में कोई हर्ज नहीं आएगा। तो ये आपको वो बजट चाहिए होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की एग्जांपल ले लें, तो आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पौने 12,000 या 11,500 यूरो के करीब आपको ब्लॉक अकाउंट में सिक्योर करना पड़ता है फॉर यू टू सिक्योर your visa. Now remember that this is not a university requirement. This is a requirement by the German embassy to grant you the visa. To they make sure कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ पे easily and comfortably रह सकते हैं. So that you must remember this. For Germany, everyone needs this amount of money, but Germany is a very good institution. A lot of students are worried about what will happen about the languages. There are many institutions that offer completely English-based learning aspects. एक कॉमन फिनोमेना है कि शायद इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी नहीं चाहिए होती। इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्पिट 99% जो यूनिवर्सिटीज़ जो कि अच्छी रिकग्नाइजिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंग्लिश कॉम्पिटेंसी चाहिए होती है, जिसमें IELTS इज़ द बेस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन दैट यू कैन सिक्योर फॉर योर सेल्फ टू गो स्टडी अब्रॉड। इसमें डिफरेंट बैंड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि अगर आप इंजीनियरिंग साइड के हैं, साइंस की साइड के हैं, या बिजनेस ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स की साइड पे हैं, तो उसका डिफरेंट होता है। आप अगर हमें टच करेंगे तो वी कैन टेल यू अबाउट दैट मोर इन मोर डिटेल्स। देन सिमिलरली आपको एक चीज़ जो हम गाइड करते हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, देन अगेन आई एम अगेन सेइंग दिस कि अगर आप जर्मनी चाहते हैं कि जो चीज़ नेसेसरी नहीं है, बट हम हमेशा गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट को कि अगर आप इधर हैं और आपके पास इतना टाइम है बिफोर यू डिपार्ट फॉर द डेस्टिनेशन कंट्री, तो आप अपने आप को एटलीस्ट इधर प्रीमियर लेवल या बिगिनर लेवल की जर्मन लैंग्वेज सिखाएं, अपना कोर्स करें, उसकी सर्टिफिकेशन ले लें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि यूनिवर्सिटी ना सही, लेकिन जब आप सोशल लाइफ में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, चीज़ों में जाएंगे, तो आपको एक बहुत हेल्प होगी, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक कहावत है कि अगर किसी किसी नेशन में किसी नेशन को समझने की ज़रूरत है, किसी कौम को समझने की ज़रूरत है, तो उसकी लैंग्वेज, यू हैव डीप डाइव इनटू देयर लैंग्वेज एंड टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर यू नीड टू नो देयर लैंग्वेज। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आपके पास एक बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं कि आप उस कंट्री में सक्सेसफुल हो जाएं एज़ कम्पेयर टू समवन हु डज़ नॉट हैव द लैंग्वेज एज। ये हरगिज़ बात नहीं है कि जो लैंग्वेज नहीं करते वो नहीं कर सकते, बट like I said, there's always an edge if you know German. Similarly, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यही रूट है कि अगर आपके पास अपनी एक्सपेंस पूरे करने के बजट से, then you can obviously have a good chance to go study there. Then there I would like to address the fact of scholarships. अब मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं, कॉमनवेल्थ बेस्ड हैं, शबनिंग बेस्ड है, देयर इज़ HEC बेस्ड स्कॉलरशिप, देयर आर अदर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, बहुत सारी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, जिसमें फेलोशिप बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, जिसमें एक्सचेंज स्कॉलरशिप्स होती हैं, USEF की है, ऑब्वियसली फुल ब्राइट की स्कॉलरशिप है। So if someone wants to apply through these applications, जिनकी अभी शेवनिंग की भी विंडो ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, वी हैव अ स्मॉल टाइम, बट वी स्टिल हैव दैट टाइम टू अप्लाई। इसी तरह अगर फुल ब्राइट है, अगर किसी चीज़ की भी आपने अप्लाई करना चाहते हैं और आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो यू मस्ट गेट इन टच विद अस नाउ बिफोर any more time is spent, and we will help you get through that applications and everything, and make sure कि आपकी एक एप्लीकेशन competitive application हो और you stand a good chance in securing scholarships. We have a good ratio of acceptance, but like I said, every case is individual and unique, and we deal it the same way as well. We do not apply a general process to every application that comes out to us. We give individual attention. We have counselors that try to study the case properly and then decide how to best approach the application. This is very important. हम लोग कम एप्लीकेशंस देते हैं, हम लोग मैथ्स में स्टूडेंट्स को नहीं लेते, हम कम एप्लीकेशंस देते हैं टू इंश्योर क्वालिटी इफेक्ट्स, क्वालिटी सर्विसेज। हमारे पास अगर आप आएंगे तो हम आपको इंडिविजुअल अटेंशन देंगे। यू कैन ऑब्वियसली come to our office, which is in Islamabad in Gulberg Green. You can secure an appointment with us online, and then we'll be happy to give you an ample time during that appointment to answer your basic questions, and then start your application process. And we'll be happy to come see you on the airport to see you fly out of the country.
Scholarships की भी मैंने आपको बात कर दी कि we are also helping our students for scholarship. Then, like I said again, you have the opportunity. I time and again say that any student from O level onwards, metric onwards, has this opportunity to go abroad and study. Now, a lot of questions were comes in, and discussions come in for how what's the best approach. Is there study gaps के बारे में बात होती है, मुख्तलिफ चीज़ें बात है. So study gaps जो होते हैं, definitely they are a bit of issues, but depends what sort of study gap is there in your CV. अगर आपके study gap में एक genuine reason है कि maybe medical reason है, कोई मुख्तलिफ रीजन है, अगर वो जेन्युइन रीजंस आपके हैं, तो यू हैव अ गुड केस टू फाइल फॉर योर स्टडी अब्रॉड एप्लीकेशन. एंड मोस्टली स्टूडेंट्स के उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, दे गो अब्रॉड unless there is a huge gap and you cannot justify it. Then obviously that's something that you will be lacking in your application and stand a chance of rejection. But लाइक आई सेड, अगर कोई स्टूडेंट जनरली एक टाइम लाइन से पढ़ रहा है और उसके कोई इशू है, मे बी कोविड-19 के थ्रू या किसी और वजह से या फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो चीज़ें मेंशन करके आप चीज़ें आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू नाउ हैव आल्सो प्रोवाइड द प्रूफ दैट अभी आपकी सारी सिचुएशन अप टू द मार्क है, अप टू द रिक्वायर्ड कंडीशन है, सिचुएशन है, सो यू कैन ऑब्वियसली गो ahead and do that at the same time as well. So, if, like I said again, that we are here, I'm based out of Islamabad, but I am easily approachable through the entire Middle East and Pakistan, South Asia, Central Asia through online. You can secure an online appointment with me. It's based 30 minutes, 60 minutes, 1 hour, 1 hour, 30 minutes के appointment आपको हमारे साथ secure कर सकते हैं. We can have discussion. We can look into your cases individually, attentively, and आपको उसके बारे में feedback दे सकते हैं. And हम personally हर एप्लीकेशन को लेके चलते हैं आगे, और मेक श्योर करते हैं कि वो एक्सेप्ट हो, और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, या हमारे जो फ्यूचर यूथ है, वो उनके पास ये चांस हो कि वो बाहर जाके अच्छी तरीके से पढ़ें और अपना करियर बिल्ड करें. So they are obviously, you can get in touch with us through our Facebook pages, our Instagram pages, LinkedIn pages, or you can just simply WhatsApp me on the numbers provided on the Facebook pages, or you can also email us. The emails are also provided on the pages. You can also come and visit our office if you're based out of Islamabad, or if you're just coming to visit Islamabad for some enjoyment or some work purposes or any other purposes. You can come and get in touch with us. सिमिलरली एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वन ऑन वन आयत सेशंस की ज़रूरत है, या इफ़ यू लुकिंग फॉर someone who some people some place that which is based in Islamabad, which has a low number of batch, which focuses on quality. Like अक्सर मैंने बैचेस में देखा है एकेडमीज में कि 10-10 15-15 स्टूडेंट्स आयट्स की क्लासेस में मौजूद होते हैं. तो हम लोग यूजली फोकस करते हैं कि हम 5 6 7 बच्चों से ज़्यादा ना लें, ताकि हम उनको इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकें, उनकी क्वालिटी पे इफेक्ट कर सकें. अगर आपको इस तरह की किसी एजुकेशन आइट्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पीटी की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं. वी give customized packages. We have, depends if it's a one-on-one online, if it's one-on-one on site, different other things, so you can get in touch with us. So for all those students that are looking at this live session, or that will be, going through this live session later on, get in touch with us. We can help you secure that spot on abroad, and we can help you secure your future. And if you have any other questions, any other issues, or any other queries that you feel that must be addressed, then you can obviously secure an appointment with us and get in touch with us. And we'll be happy to help you out, address all your queries, and make sure that you have all the details that you need to be confident enough to file your application with us. Once again, I invite each and every one of you that's watching this live session to come connect with us, and let's help you go study abroad. And if once again, I would mention that any student from O levels metric onwards has this opportunity to go abroad and study, not just after A levels FPC, but after O levels. So we're looking forward to hear from you, and I will keep this session short and precise, and I'll be quitting this session soon enough in a couple of minutes. So. Uh,
For all those individuals that were asking me to set up a station or thing, I now have an office in Islamabad, Gulbarga. You can come and visit us and get your personalized attention, and we're looking forward to treat you. Thank you, and Allah Hafiz.